बॉलीवुड सितारों के मैड्रिड पहुंचने के साथ ही शुरू होती है आईफा वीकेंड विद द स्टार्स की सुपर एंटरटेनिंग रोलर कोस्टर राइड, जहां होगी ढेर सारी मस्ती। See, I don't work. Everything Karan has to do. Yes, my lady. 783 euros. करी पत्ता का जो प्लांट है उसको स्मेल करना एक आर्ट है, आर्ट। शेफ has said I have a good hand. Race with Tiger Shroff. अपने मोहल्ले का पहला लौंडा हूं जो दीपिका से मिलने जा रहा है, वरना अपने यहाँ के लौंडे तो मेले में रस्सी पर चलने वाले करीना और महिमा से ही मिलकर आ जाते हैं। आशीर्वाद दे माँ, आशीर्वाद दे। थैंक यू। हमने दीपिका से मोहब्बत की, अय्याशी नहीं। Please welcome with me on this the beautiful, the ravishing, मेरे दिल की चोर दीपिका पादुकोण. Hi. Hello, hola, Hi. welcome to IFA Madrid. Chang, I've known you for so many years. Yes, since It's I started amazing. singing, I guess. Yes. Wow, हमारा रिश्ता उतना पुराना है, लेकिन उतना ही पुराना रिश्ता आपका आईफा के साथ भी है। जी। आपका उसके बारे में क्या कहना है? It's almost become like family. और हर साल we get to see a new place. Yes. हमारे फैंस के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है हमें, and you know, I think it makes this whole experience that much more special. You're performing multiple nominations. As a fan, I'm like ecstatic. मुझे इतनी खुशी है कि दीपिका is doing so well over the last couple of years. Thank But you. as the center of all that attention, आपको उसके बारे में क्या लगता है कि oh my God, nominations, expectations, आईफा में perform करना है? No, I think मैं जो भी करती हूँ मैं दिल से करती हूँ। बचपन से ही मैं जानती थी कि मुझे कैमरे के सामने मुझे परफॉर्म करना है, मुझे एक्टर बनना है। And I think that is my mantra. If I decide to do something, then I do it Right. to the best of my ability. और दीपिका, अगर आपको स्पेन में एक रोमांटिक डेट के लिए जाना होता, तो वो कौन होता? आप क्या करते और कहाँ जाते? Chang, unfortunately, you're not on that list. हाँ, क्योंकि एक You know, ही I but like it. I can buy you an ice cream afterwards. Thank you. I would appreciate and make that. up for it. Well, since we're in Spain, I would cook for Antonio Banderas. Oh. No? Oh. क्या No? बात है? बिल्कुल, बिल्कुल. That is a very, Or very good Javier choice. Bardem. Ah, my goodness. Both of them, maybe. See, very, very good actors, very good looking, very No? charming. I would cook for them, you know, do a picnic in the park. Uh-huh. That kind of date. So that kind of date के लिए you would have to cook something Spanish for them, with a touch of Indian. Of है ना? course, of course. तो मेरे ख्याल से वो हम यहाँ पे सीख सकते हैं। एक बहुत खास दोस्त है यहाँ पे, जी। हम उनसे मिलेंगे और वो आपको थोड़ा सिखाएंगे, आप उनको शायद थोड़ा सिखाएंगे। Okay. It'll be a lot of fun. Are you Okay. ready for that? Yes. All right. Let's do it. Let's do it. हम हैं मैड्रिड में, जहां रिनाउंड स्पेनिश शेफ गैब्रियाला दीपिका को सिखाएंगी एक स्पेनिश डिश, और दीपिका पूरी तरह से तैयार हैं एक स्पेनिश डिश बनाने के लिए। Hello, chef. Hello, Deepika. So lovely to have you here. Thank you, and I'm so excited about this. मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें स्पेनिश कुकिंग सीखने का मौका मिल रहा है, और गैब्रिएला जो है हमें एक बहुत ही टिपिकल स्पेनिश डिश सिखाने वाले हैं। Let's do this because मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, but most importantly मुझे खाने का बहुत बड़ा शौक है। So yeah, let's do this. This is a very traditional Spanish dish, paella. Paella is the name of the pan. Okay. Okay. And we cook rice in a totally different way than Indian food. I must say, I'm madly in love with Indian food. I adore Indian food. I even have a curry plant in my office. Ooh. So my Yes, favorite please. food in the world, I think, is Indian. Can you tell us what vegetables are in Oh, this already? yes. We have green beans, artichokes, eggplant, Swiss chard, pepper, zucchini, asparagus. Yummy! That's all the vegetables in the world. Fresh My mother's peas. going to be really happy that I'm going to eat so much vegetables.
I'm going to add a few curry leaves. I always like to add a few spices. This is going to be the Indian touch, the spicy Indian touch. काफी सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम अपने इंडियन फूड में तो इस्तेमाल करते ही हैं. You have a good hand here. Chef has said I have a good hand. तो दीपिका मजा आ रहा है? Yes, I'm loving it. And in fact, जब मैं स्कूल में थी, and every evenings my friends and we would all get together. And I'll tell you this incident once where we decided to cook eggs. Okay. So we took 4 bricks, and we created our own fire. अच्छा. And we decided to bring some eggs from upstairs from the apartment. And everything was ready, the fire was going, the ingredients were all done, and it was the last step where we just had to kind of put the eggs in. लेकिन जब कह रहे हो लास्ट स्टेप तो कुछ तो हुआ ही होगा फिर. Listen, so we were like, where are the eggs? I brought the eggs, where are the eggs? We can't find the eggs. So I was like, okay, now forget it, let's just go up and get some more eggs. And I got up because we were sitting down on the floor, and I got up. Oh no. I sat on the eggs. Oh no. So that was my first experience with cooking. And then cut to now where Gabriella says I have a good hand. So, you know, there's always, you can always get better at things. Yes, with practice. With a lot of And evolution. I enjoy baking. I enjoy baking actually a lot. I do bake a lot. And I love making naan katai. मुझे नान कटाई बनाना बहुत पसंद है. So, yeah. और कोई ऐसा कोई स्पेशल है जिसके लिए आप बनाते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में? I think मेरे फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, I think पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं जब I think when children cook for their parents, it feels like, you know, a sense of achievement for parents, I think. And I also find it very therapeutic. You know, कभी-कभी weekends पे I enjoy cooking. I live alone and I like cooking. Okay. And what did... So this is chili powder. Chili powder, paprika we So have we here. put lots. We put the whole thing. As much as you like. Indians like our spices. रेनाउंड स्पेनिश शेफ गैब्रिएला को अपने कड़ी पत्ते के पौधे से बेहद प्यार है और वो कई बार उससे बातें भी करती हैं. दीपिका, मुझे भी इसकी खुशबू से रसम और सांबर याद आ गया. Oh my God! Don't. दीपिका, क्या आप भी कोशिश करना चाहेंगी इस प्यारे से कड़ी पत्ते से कुछ बात करने की, जैसे गैब्रिएला करती हैं? चैंग पता है? हाँ. करी पत्ता का जो ट्री है ना, जो ये प्लांट है, उसको स्मेल करना एक आर्ट है, आर्ट. अच्छा. Yeah, you'll never get it. I will never get it. Yeah. क्योंकि मैं बहुत डिक्शनरी नहीं लेके आया अभी. But it is beautiful. This is lovely. It is lovely, isn't it? So it's a fabulous plant. Such a happy plant. It is. It's done. Oh, it's done. तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और स्वादिष्ट शाम रही. Thank you so much, Deepika, for cooking this for us. Thank and you. Can't wait to taste it. अभी मैं ऐसी कड़छी डाल के बस खाना शुरू कर दूं. Wow. But thank you once again, Thank and all you. the very best. Thank Have you. fun, and I'm Yes. looking forward to the performance and all your nominations. All the very best for that. Thank you. I'm most looking forward to this dish, even more than my performance.